Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I hope that you're doing well. Let's start with this project where I build a Notion extension. And basically, मेरा ख्याल है कि extensions are a great way to demonstrate real world projects because you're solving real world problems using extensions. Specifically, जो extension मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, that is to download Notion pages as Markdown. एंड आई नो कि ये फीचर नोशन में अब आ गया हुआ है, बट स्टिल आई थिंक इट्स अ ग्रेट वे टू शो योर प्रोग्रेस यूजिंग दैट. ठीक है, सो राइट टू डू, लेट्स स्टार्ट दैट एक्सटेंशन. सो जो पहली चीज हम करेंगे वो होगी मैनिफेस्ट फाइल. ठीक है, एंड अ मैनिफेस्ट इज बेसिकली ए वे फॉर योर एक्सटेंशन टू सी कि उसने क्या क्या चीजें ग्रैब करनी है एक्सटेंशन में से. ठीक है, हम जो मोस्ट स्पेसिफिकली यूज करेंगे वो हम ये दोनों करेंगे, रजिस्टर का कंटेंट स्क्रिप्ट और इंजेक्ट अ कंटेंट स्क्रिप्ट. सो इन दोनों का लेट मी वॉक यू थ्रू अ लिटिल बिट कि ये होती क्या है. ठीक है, कंटेंट स्क्रिप्ट जो रजिस्टर का कंटेंट स्क्रिप्ट है ये वाला, दिस इज गोइंग टू ग्रैब दिस कंटेंट. ये मेरा एक एक्चुअली एनएलपी का एक प्रपोजल था एक कोर्स का. सो वो इस सब को बेसिकली इस सारी चीज को ग्रैब करेगा, राइट. एंड इंजेक्ट अ कंटेंट स्क्रिप्ट एक हमारी फाइल में एक जो कि एक बैकग्राउंड सर्विस वर्कर होगा जो कि हमें यहाँ पे ये वाला. ठीक है, इस सर्विस वर्कर के अंदर हमारा कंटेंट स्क्रिप्ट भेजेगा. ठीक है, इट्स गोना सेंड आवर कंटेंट स्क्रिप्ट जहां से हम फिर डाउनलोड करेंगे. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट दिस थिंग. सो एक्चुअली मैनिफेस्ट जो हमारी होगी वो कुछ इस तरह की होगी, राइट. आई एम जस्ट गोइंग टू शो बिकॉज 5 मिनट में आई कैन नॉट कोड दिस. ये कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन है, नेम, वेरिएशन, परमिशंस. हमें जो नोशन का इस वक्त एक्टिव टैब है वो चाहिए जो कि हमने शो किया होगा. हमें ऑब्वियसली कंटेंट जो कि स्क्रिप्ट हमने करना है एचटीएमएल से वो चाहिए. हमें डाउनलोड करने की परमिशन चाहिए और हमें स्टोरेज की परमिशन चाहिए, राइट. ये कुछ आइकॉन्स हैं जो कि एक्सटेंशंस को चाहिए होती हैं. दिस इज नो, ये नाम ये हो तो खैर है. हमें कौन से होस्ट से डाउनलोड करना है, विच इज notion.so, राइट. हमें यहाँ से डाउनलोड करना है. एंड इसके अलावा हमारा एक्शन क्या है कि जब हम लेट मी शो यू इसका मतलब क्या है. जब हम इसको क्लिक करेंगे इस मार्कडाउन को, इस चीज को, सॉरी, जो एक्सटेंशन है, तो हमारे ऊपर क्या पॉपअप आएगा, राइट. क्या यहाँ पे होगा इस क्लिक करने के ऊपर. मैंने यहाँ पे पॉपअप शो किया, यू कैन एक्चुअली स्टार्ट डाउनलोडिंग डायरेक्टली टू. खैर है, मैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. उसके अलावा ऑब्वियसली जैसे कि मैंने बताया था कि कंटेंट स्क्रिप्ट कहाँ पे जाना चाहिए, वो बैकग्राउंड के अंदर जाना चाहिए जो कि एक सर्विस वर्कर है. और कौन से कंटेंट स्क्रिप्ट से जाएगा, हमारे कंटेंट डॉट जेएस से डेटा आएगा, एचटीएमएल का डेटा ये कंटेंट पार्स करेगा. और किस साइट से पार्स करेगा, नोशन से. लेट मी स्पीक इट क्लियरली. नोशन से डेटा उठा के हमारा कंटेंट डॉट जेएस पार्स करेगा और सेंड करेगा बैकग्राउंड डॉट जेएस को. So I think that is the walkthrough for manifest. Let's talk about the content.js file. So in the second part हम ये share करेंगे कि what does how this flow works actually. ठीक है, so हमारे पास ये pop-up का एक default pop-up है, right. जैसे कि let me show you from here. This is the pop-up, right, and इसके ऊपर एक बटन है and बटन के ऊपर it is going to download the file. Pretty straightforward, there is no rocket science in that. Pop-up के ऊपर what we're going to do is that we're going to grab the active tab, which is basically the Notion proposal page right here, or any Notion page for that. And it is going to send the active tab to a content script, right? जो कि उस content script से जो sorry active tab की HTML है, it is going to parse the content from that page. And if अगर हमने ये we haven't enabled this permission, it is not going to run this line hold. ठीक है, and it is going to just send the active tab with a download page to the whatever is going to receive that. Now why are we doing this? First of all, हम इसे इसलिए कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे जो क्रोम का जो आर्किटेक्चर है बेसिकली इट इज अ मैसेज पासिंग सिस्टम. एंड हाउ मैसेज पासिंग सिस्टम्स वर्क is that anyone, they're asynchronous, anyone can grab anything that they like, and we need a way to tell apart क्योंकि बैकग्राउंड भी लिसन कर रही है और कंटेंट भी लिसन कर रही है. एंड वी नीड अ वे टू टेल अपार्ट दीज थिंग्स कि कंटेंट ये वाला ग्रैब करेगी एंड बैकग्राउंड है वो ये वाला ग्रैब करेगी. We have sent the active tab to the content file, right. ठीक है,
this one. And you can see that content file is specifically going to grab the download page attribute, right? जो download page वाला था. And जो download page है, it is then going to process the content, which is extract the content जो हमारी चीजें हैं, and it is going to send the processed content to the next file, which is the background. Process extracted content and ये जाएगा background को. And अगर हम नीचे जाएं तो you can see के it is going up background content. So खैर इस पे वापस आते हैं अभी. Let's walk through the content file. It is going to grab the body of the request, which is the page content, right? And body के अंदर हम blocks पकड़ेंगे जितने भी हैं, because notion के जो building blocks हैं, they are called notion block. ठीक है? And you can see notion header block, notion bullet list block, and we're going to grab each header. ठीक है? 3 headings हैं, there are 3 headings, and we're going to grab each one of them, h1, h2, h3, और हम इसे एक content array के अंदर push कर देंगे. Now I'm not going for a hierarchical structure because hierarchical structure tends to complex things a little bit. ठीक है? So हम इसकी identifier के साथ, with its identifier, we're just going to push it to the one dimensional array, and our markdown is going to construct it from that 1D array. Similarly for lists, ठीक है? और अगर nested lists है तो हम nesting भी करेंगे lists की. ठीक है? किस तरह से करेंगे कि हम उसका level जो है वो grab करेंगे. अगर for example if you have 1D list and 2D list and 3D list, I think यहाँ पर बनी भी होगी. Let me show you. ये हो जाएगी लेवल 2 लिस्ट. दिस इज अ लेवल 1 लिस्ट, एंड जब 1D अरे में लेवल 1 आते हैं ये 2 आ जाएगी. आवर कोड विल नो टू पार्स दिस अकॉर्डिंग टू व्हाट इट इज. ठीक है? सो इसी तरह हमने नंबर्ड लिस्ट भी ग्रैब कर ली, रेगुलर लिस्ट भी कर ली, एंड कोड ब्लॉक्स भी ग्रैब कर लिए, राइट? सो देयर इज नो सच थिंग. The get list item is a plain depth first search. ठीक है? There is no such rocket science to that. के depth first search के through it is going to see के whether it is level 1 or level 2, level 3, and I think it is that much, and there is no such biggie to it. Welcome back, and I think this is the final part where we walk through an extension on Chrome, building an extension on Chrome. And इसमें हम जो content हमने receive किया था content script से, हम we're going to pass it in the background.js file. ठीक है? So without further ado, let's go into it. I'm going to shut these down and I'm going to open the background. ठीक है? Background में this is a function that converts a content array into markdown. ठीक है? And how a content array is shifted into markdown is कि जो हमारे पास attribute की type है, we are going to format it into a text file, a text string symbol. ठीक है? And this is going to be a title of the markdown. This is going to be a heading. This is self-explanatory, right? The bullet point list is the numbered list is interesting, okay, because we need to push according to the intent of that file, right? And this is actually self-explanatory code. Okay, there is no such biggie in this. The biggie in this is downloading, right? कि जब हमारे पास एक request आई with the action which is process extracted content, हमने उसकी we have grabbed the markdown representation, उसकी markdown representation ले ली. The next thing is downloading that content into the user's local storage. And how does that work is कि we need a URL representation of that string, because URL representation is kind of straightforward as compared to object blobs. Data URL is a straightforward representation, and we are going to download that URL representation and download it to the user's file. ठीक है? So let me show you again. This is ये सारा कुछ GitHub के ऊपर मैंने डाला हुआ है, and this extension basically has very low features for right now. कि इसमें भी bullet lists download होती हैं, numbered lists download होती हैं, code blocks download होते हैं. Feel free to contribute it to the extension, and yeah. So let me show you how this works. मेरे पास एक proposal है. Let me download it. Yeah, ठीक है. अगर मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, so let me
you can see कि ये वो मेरा पूरा proposal था, which is right here. ठीक है. अच्छा, वन मोर थिंग कि यहाँ पे ये टेबल ऑफ कंटेंट्स क्यों नहीं आ रहा, राइट? टेबल ऑफ कंटेंट्स इज अ नोशन फीचर विच एक्चुअली लिंक्स अकॉर्डिंग टू पीडीएफ blocks. So it is not a markdown feature, this is a notions injected feature, so that is why this is not here. You guys can contribute it to here. It's open for that. And on a concluding note, मैं यही कहूँगा कि I think extensions are a great way to showcase real world masteries. They basically cause you to think deep into how an existing system is working on top of building your own things on that system. So I think extensions are a great way, great projects to put on your resumes. And yeah, with having said that, I wish you all the best in your journey. Feel free to reach out to me, and ये GitHub के ऊपर ये put down हुआ है. Thank you so much.